Ergot alkaloids, it consists of indole alkaloids and they are biosynthesized from tryptophan amino acid. See, it can be asked in the Niper. So indole alkaloids, again they are biosynthesized from tryptophan amino acid, right? So ergot is the plant or is the name of your plant. It is actually, it is not a plant, it is a fungus. So nowadays there is a lot of noise about the black fungus. It is like that one. So ergot is nothing but it is a fungus. So ergot is also known as ray of ergot or ergot ray. Ergot is also known as ergot ray or ergota or spurred ray. You have to remember the synonyms also. Okay. So ergot is known as ray of ergot, ergota, spurred ray. Now what is the biological source of this ergot? So it is a dried Sclerodium of fungus Claviceps purpurea. It is a dried Sclerodium of fungus known as a Claviceps purpurea family Claviceptaceae, or it is also known as a Hypocreaceae. Just a biological source, try to remember it. Sclerodium of fungus Claviceps purpurea family Claviceptaceae, or it is also known as Hypocreaceae. Now this fungus is developed on the ovary of ray plant, which is known as a Secale Cerulli family Gramineae. मतलब क्या, ये एक स्क्लेरोडियम जो फंगस है, फंगस का स्क्लेरोडियम जो होता है वो डेवलप होता है किसके ऊपर, इसका कौन सा फंगस है वो, क्लेविसेप्स, स्क्लेरोडियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स पर्पुरिया. इट इज डेवलप्ड ऑन द रे ओवरी ऑफ रे प्लांट. मतलब आपका जो चावल का ये होता है, चावल का जो प्लांट होता है, प्लांट के जहाँ चावल आता है तो उसका जो ओवरी से चावल निकलता है, ओवरी से डेवलपमेंट होता है चावल का, तो वो ओवरी पे फंगस इन्फेक्ट. सो इट इज ड्राइड स्क्लेरोडियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स family Claviceptaceae. It is developed on the ovary of ray. Now this dried Sclerodium fungus known as Claviceps family Claviceptaceae. It is developed on the ray plant known as Secale Cerulli family Gramineae. So जो भी आपका राइस का प्लांट होता है उसके जो ओवरी, जो राइस का दाना जहाँ से आता है ओवरी से, तो वहाँ पे वो इन्फेक्ट करता है, फंगस करता है, कौन सा, Claviceps purpurea. एंड वही फंगस उसमें अल्कोलाइड्स बनाता है. कौन से अल्कोलाइड बनाता है, दैट इज नथिंग बट योर indole alkaloids. That is nothing but your indole alkaloids. So dried Sclerodium of fungus Claviceps purpurea Claviceptaceae family. It is developed on the ray plant known as a Secale Cerulli Gramineae. Rest of the things, these geographical source and all that, not important, but you should know it contains not less than 0.19% of total alkaloids calculated at ergotoxin. Whenever you want to remember the biological source, you have to remember in this manner, like dried Sclerodium of fungus Claviceps purpurea family Claviceptaceae, or it is known as Hypocreaceae, developed on the ovary of the ray plant Secale Cerulli family Gramineae, and it should not contain not less than 0.19% of total alkaloids ergotoxin, which is not less than 15% of water soluble alkaloids calculated as ergometrin. So out of this 0.9% of total alkaloids ergotoxin, out of this 15% should consist of water soluble alkaloids, and that is nothing but the ergomet. 0.1%, just remember the name. Then next one is the cultivation collection. So all important part is not there. So in case of cultivation collection, just remember there are three ways to cultivate it. So either by natural way, either by artificial way, or by sclerotial production. So natural way means what? It is the way where there is a cultivation of your ray plant and subsequent infection by the fungus. So cultivation of plant and subsequently you have to infect the plant with the fungus, and that is nothing but the natural way of cultivation. Then artificial way, which is known as a saprophytic production. Just remember the name, that's it. Detail में जाने की जरूरत नहीं. Then sclerotial stage. Another is a sclerotial production. So in this stage, most of the alkaloids will be there. So, or it is also known as dormant stage, which consists of a maximum amount of alkaloids. So in case of ergot alkaloids, the sclerotial stage of its life cycle, we will see the life cycle of your ergot, don't worry, but just remember in the life cycle of ergot fungus, the sclerotial stage which will produce high amount of alkaloids. So that's why the sclerotial stage, which is known as dormant stage, and it consists of a highest amount of alkaloids. And this was question in GPAT. So you have to remember which stage of ergot life cycle will have a highest amount of alkaloids. So that is nothing but the sclerotial stage. Now see your fungus, जो फंगस है आपका Claviceps purpurea, ये कैसे ग्रो होता है? What is the life cycle of this ergot? So life cycle of ergot is divided into two stages.
So first stage is nothing but the sexual development stage. First stage is the sexual development stage. It is also known as honeydew stage or cephalical stage. So you have to remember cephalical stage, honeydew stage or sexual development stage. It is the first stage. So what happens in this stage? So infection of the ovary of ray. Okay. So ये जो फंगस है वो फंगस का एस्कोस्पोर मतलब स्पोर्स रहते हैं उसके एस्कोस्पोर होते हैं उसके लाइफ साइकिल का तो वो जमीन में रहते हैं ठीक है जमीन में होता है एस्कोस्पोर तो वो क्या है एस्कोस्पोर जैसे ही विंड होता है आपका जैसे विंड चले तो एक तो ये एस्कोस्पोर डॉर्मेंट रहते हैं मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं होते कब तक जब तक उनका फेवरेबल कंडीशन नहीं आता ओके सो एस्कोस्पोर विल रिमेन डॉर्मेंट इन द सॉइल ओके और even in the rice okay they are dormant they will remain dormant in the your soil or rice and after in a favorable condition means what in the spring season or rainy season जैसे ही spring season आता है rainy season आता है तो वो क्या करते हैं वो dormant से वो grow हो जाते हैं और वो एस्कोस्पोर बनते हैं एस्कोस्पोर और एस्कोस्पोर जो है वो विंड जैसे हवा चलती है वो एस्कोस्पोर वहां से उड़ के प्लांट में जाके अटक जाता है और वो प्लांट में वो वहां पे रह के वो जैसे रे प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसके ओवरी को जाके इन्फेक्ट सो इन्फेक्शन ऑफ ओवरी दैट इज इन्फेक्शन ऑफ ओवरी ऑफ द रे प्लांट एट द बेस बाय एस्कोस्पोर ऑफ द फंगस in summer or spring season it germinates into the moisture and damp climate means when there is a rainy season it leads to a formation of hypha which is a soft tissue over the surface of ovary then that is called as a mycelium once the ascospores will infect the ovary after that there is a formation of hypha is nothing but is a white mass of tissue of that fungus over the surface of ovary that now it is known as a mycelium this mycelium will secrete a viscous sugary fluid which is known as a honeydew, which is a sweet in taste and it will attract more insects like your flies, your ants, your other insects, caterpillars, etc. So that there will be spread of more infection. That's why this sexual development stage is also known as a honeydew stage because there is a secretion of a sugary fluid or sugary liquid by a mycelium known as a honeydew. As it is a sweet in taste, जैसे वो स्वीट होता है वहाँ क्या है स्वीट जहाँ पे स्वीट है वहाँ पे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे वहाँ पे के चींटियाँ आ जाएंगी इंसेक्ट आ जाएंगे और वो उसको खाने के लिए वो वहाँ से लेंगे और दूसरे प्लांट में उड़ जाएंगे तो इस तरह कैसे वो आपका अपना इन्फेक्शन या फिर अपना स्प्रेडिंग करते हैं कौन ये फंगस ओके सो दैट इज नोन एज अ सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेज और हनीड्यू स्टेज और सेपेलिकल स्टेज नाउ ड्यूरिंग दिस हनीड्यू जहाँ पे हनीड्यू होता है जहाँ पे शुगरी फ्लूइड सिक्रीट करता है कौन ये जो माइसेलियम बनाया किसने एस्कोस्पोर से क्या बना माइसेलियम बना एस्कोस्पोर किसका है फंगस का है फंगस ने माइसेलियम बनाया इन्फेक्शन करके और उसके बाद वो सिक्रीट करता है फ्लूइड नोन एज अ विस्कस शुगरी फ्लूइड नोन एज अ honeydew at this stage of honeydew when there is a honeydew there is a maximum amount of alkaloids so they are not alkaloids produced by this ray plant they are the alkaloid produced by this fungus known as the Claviceps purpurea right now this is the first stage that is known as the sexual development stage or honeydew stage or sepalical stage now second one Sclerodium stage now this stage is known as a dormant stage at this stage they will not multiply at this stage they are not so this is the dormant stage of fungus and consists of a maximum amount of alkaloids जैसे ये स्टेज में होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्कोलाइड्स होता है ये क्वेश्चन आया था जीपैट में स्क्लेरोटियम स्टेज और स्क्लेरोटियल स्टेज ऑफ अर्गोट लाइफ साइकिल विल हैव maximum amount of alkaloids I am repeating it again so this was question in so these are the two life cycle stages of these are the two stages of life cycle of now we'll see what are the chemical constituents present in this argot so first one is microscope so actually it is not a leaf it is not a bark it is not a part of plant so it is a fungus so you will not have any particular microscopic characters over here so Sclerotium does not have consist of starch grains calcium oxalate or any kind of lignite because it is not a part of now we'll see the chemical constituent now the chemical constituent of this ergot alkaloids is divided into three parts first one is a water soluble part second is a water insoluble part in water insoluble also there are two types first one is a water soluble part water soluble or
अर्गोमेट्रिन ग्रुप. सो वाटर सोल्यूबल और अर्गोमेट्रिन, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है. सो वाटर सोल्यूबल और अर्गोमेट्रिन पार्ट ऑफ अर्गोट अल्कलॉइड्स, उसमें जो केमिकल कांस्टेंट होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप, वाटर सोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल. इन केस ऑफ वाटर सोल्यूबल it is nothing but the argometrin group. So all argometrin group of alkaloids, they are water soluble. For example, argonovine, argometrin. So out of this, argometrin is a levorotary. Argometrin is a levorotary. Argotamine, argometrinin. This one is argometrin. This one is argometrin. This one is argometrinin. So yana. So argometrin is a levorotary, whereas argometrinin is a dextrorotary. So just remember, ये नाइपर में बहुत बार पूछते हैं. So this was about water soluble or argometrin. So in case of argometrin, argonovine is there, argometrin is there, argometrin is a levorotary, argometrinin is a dextrorotary. Now water insoluble group, which is known as the argotamine group. So argotamine group is nothing but the water insoluble. Argotamine group is a water insoluble. In case of argotamine, argosine, two types. So most of the time they used to ask which one is not water soluble, ergot alkaloid. So ergotamine is not water soluble, argosine is not water soluble. Again, water insoluble but ergotoxin group, water insoluble ergotoxin group, water insoluble ergotamine. So in case of ergotoxin group, ergocreptin, ergocrystine, ergoconine, ergocreptin, ergocrystine, ergoconine. These are the three alkaloids which belongs to water insoluble ergotoxin group. So you have to remember which group is there and which is water soluble, which is not water. So in case of water soluble, only argometrinin is there. Argometrin, which is a levorotary, and argometrinin NINE is a dextrorotary. You can remember easily suffix at the end of the name of alkaloid. If there is a INE, they are a levorotary, and all are medicinally. There is a NINE, which is a suffix after the name of alkaloid. Then all these alkaloids are डेक्स्ट्रो, दे आर मेडिसिनली नॉट एक्टिव. सो जितने भी लिगो है इसमें, लिगो अल्कोलाइड्स है, जैसे आपने बोला है यहाँ पे आयनी, अर्गोटामाइन, अर्गोमेट्रिन, अर्गोमेट्रिन, ये सब लिवोरोटरी है, एक्टिव है. और दोज अल्कोलाइड्स व्हिच विल हैव एनआईएनई, अर्गोमेट्रिन, दीज आर नथिंग बट द डेक्स्ट्रोरोटरी और दे आर नॉट मेडिसिनली एक्टिव. ओके. एंड नाउ ऑल द अल्कोलाइड्स प्रेजेंट इन द अर्गोट, all alkaloids of ergot, they are present as a salt of lysergic acid. All alkaloids, they are the derivative of lysergic acid, or they are present as a salt of lysergic acid. We have seen in the very first lecture of alkaloids that alkaloids may be either present in the three forms. Either they may present as a salt of organic acids, either they may present in the plant as a source of inorganic acid, or may be present as a sort of special acids. Okay, what are the special acids? Like in case of opium, they are present as a salt of macoic acid. In case of ergot alkaloids, they are present as a sort of lysergic acid. In case of cinchona, they are present as a sort of unique acid. So there are different type of acid. So ये question favorite है ना. So ergot alkaloids are present in the form of they are the derivative of lysergic acid, and this lysergic acid compound is a hallucinogen or a psychotropic substance. It will form again. These alkaloids, they are present in the form of lysergic acid. It's okay, but they are present. They will have a peptide bond in their structure. That's why they are present in a peptide form. Therefore, sometimes they are also known as a peptide alkaloids. तो यहाँ पे आपके 2-4 क्वेश्चन कवर हो सकते हैं. यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन बनते हैं जीपैट. कौन सा वाटर सोल्युबल है, कौन सा वाटर इनसोल्युबल है, कौन सा लिवो है, कौन सा डेक्स्ट्रो है. यहाँ पे इतना ध्यान में रखो कि कौन सा लिवो है, कौन सा डेक्स्ट्रो है. उसके बाद में आगे वहाँ पे ये कौन सा कि lysergic acid के फॉर्म में रहते हैं. All alkaloids of your ergot, they are present in the form of lysergic acid. Okay, and this lysergic acid itself is a peptide, right? That's why all alkaloids of your ergot, they are present as a peptide alkaloids. Okay, and sometimes they are known as a peptide alkaloid. That's why यहाँ पे उतना 4-5 क्वेश्चन आपका कवर हो सकता है. मे भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन ये ऑलरेडी आ चुका है बहुत बार. नाइपर में तो फेवरेट है, नाइपर में आता है, जीपैट में भी आता है. Again, now what is the use of this ergot alkaloids? So ergot alkaloids is they are oxytocic in nature. Oxytocic means they will increase your contraction of your क्या आपका जो रहता है. ओके, सो यूटेरस जो रहता है लेडीज में, जो फॉर एग्जांपल मान लो प्रेग्नेंट वुमन है, उसका यूटेरस, उसका बेबी का बर्थ होने वाला है, तो वो ऐसे ही नहीं होता बर्थ. उसके लिए वो जो एंडोमेट्रियम है या उसका
तो उसका कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए। यूटेरस है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, यूटेरस के जो मसल है उसका कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तभी तभी वो लेडीज डिलीवर कर सकेगी वो बच्चे को। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन मीन्स दे आर यूटेराइन स्टिमुलेंट। ओके, oxytocics these are those compounds which are uterine stimulant, and these ergot alkaloids are uterine stimulant. Remember, these ergot alkaloids are uterine stimulant. They will stimulate your uterus, okay, and they will cause a birth of child, right? They will cause a birth of child. They are nothing but the oxytocin, and they are also used to prevent the postpartum hemorrhage because of their oxytocic action. See, अगर किसी लेडीज में बच्चा डिलीवर नहीं कर रही है, अगर वो थक गई है, तो उसमें क्या करते हैं, ये ऑक्सीटोसिन देते हैं। जैसे आपका ऑक्सीटोसिन हो गया, ऑक्सीटोसिन जैसे आपका ऑक्सीटोसिन एज जो है आपका वो डायरेक्टली दे सकते हैं ऑक्सीटोसिन। ठीक है, या फिर आप ऑक्सीटोसिन नहीं है अवेलेबल तो आपका अर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन जो रहता है, अर्गोमेट्रिन, तो अर्गोमेट्रिन का इंजेक्शन भी ऑक्सीटोसिन है, तो वो भी दे सकते हैं, और वो अभी भी प्रैक्टिस में है। लॉट ऑफ डॉक्टर्स दे आर यूजिंग ergometrin as a oxytocin to induce the birth of child. Then again to prevent the postpartum hemorrhage, जो डिलीवरी होने के बाद जो ब्लड लॉस होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये ergometrin यूज करते हैं। Again these ergot alkaloids are used in the treatment of migraine. So presently भी मार्केट में टैबलेट्स अवेलेबल है माइग्रेन के लिए, ergot alkaloids, ergotamine, right? This ergotamine is used. So it is oxytocin used to prevent the postpartum hemorrhage and used to treat the migraine. Again, this prepared alcohol is not important storage. So these ergot alkaloids must be stored in the well-filled container. You have to protect them from moisture because they are moisture sensitive. And as it is a fungus, Sclerodium of this ergot is always susceptible for the fungal growth. इसके ऊपर दूसरा फंगस भी ग्रो हो सकता है. So you have to store in the well-filled container. तो यहाँ पे आपका दो या तीन क्वेश्चन बनता है, पिछले स्लाइड में भी उसका एक या दो क्वेश्चन बनता है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर ऑल डेरिवेटिव आर ऑल ergot alkaloids are the derivative of lysergic acid. They are present in the peptide form. Okay, therefore they are known as sometimes peptide alkaloids, right? So you have to remember water, insoluble water, soluble group. Now next, there is one chemical test. Okay, so basically there are few tests. Okay, all are not important, but just you have to remember this one test. Okay, so known as a Van Wurk reagent. Okay, so this is a specific test for ergot alkaloids known as a Van Wurk reagent or Van Wurk test. So this reagent consists of para dimethylaminobenzylaldehyde. Okay, so what is Van Wurk reagent? Para dimethylaminobenzylaldehyde. So this was again question in Niper as well as GPAT. What is the para dimethylaminobenzylaldehyde? That is nothing but the Van Wurk reagent. When these ergot alkaloids when treated with this Van Wurk reagent, they will give you blue color. Okay, जैसे आप ergot alkaloid का Van Wurk टेस्ट करते हो आप, उसमें ब्लू कलर आता है. ओके, सो अगेन यहाँ पे दो तीन टेस्ट है, और तो ये टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट है. कौन सा? Van Wurk reagent. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर. अगेन आप ये भी याद रख सकते हो कि देयर इज अ blue fluorescence of ergometrin in the water. So ergometrin in water will give you blue fluorescence. Blue fluorescence. You can remember this also. Again, under UV light, these ergot alkaloids will show red fluorescence. Okay. This ergometrin in the water will give blue fluorescence. Okay. So just remember these three tests, not all. अगर आपको पढ़ना है, you can read from the book. It is already in the book. Now you can see this is a ray plant. This is a ray plant. यहाँ पे ये जो है आपका, इसके अंदर आपका राइस होगा. ये जो है इसका अंदर राइस होगा, तो इसको इन्फेक्ट होता है. ये these are nothing but ड्राइड. ये ड्राइड है, जो इसके अंदर ओवरी है, ओवरी से आपका राइस का डेवलपमेंट होता है. तो ये फंगस क्या करता है, वो ओवरी को इन्फेक्ट करता है. और ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको, ये ब्लैक, these are nothing but the sclerotium of your fungus. These are nothing but the sclerotium of your. So what is the life cycle? We can already, ये देखो ये स्क्लेरोडियम होता है आपका. जैसे आपका रे प्लांट हो गया, आपने उसका कल्टीवेशन किया, कलेक्शन किया. कलेक्शन करते समय ये जो होता है ये स्क्लेरोडियम आपके जमीन में के फील्ड में मिलेगा आपको. वो स्क्लेरोडियम जैसे वो स्प्रिंग का सीजन आएगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा. इट विल फॉर्म ए एस्कोस्पोर्स.
Now these ascospores consist of stomata fungus. So it is sprayed on the plant. देखो ascospores eject and spray these spores on the plant by with the help of wind. जैसे वहाँ पे हवा चलेगी तो ये यहाँ से डिस्पैच होके प्लांट पे आ जाएगा. That will impact the ray. Okay, that will impact the ray. सो इट विल अगेन वहाँ पे उसका ग्रोथ हो जाएगा. ओके, ओवरी पे यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा और बाद में उसका स्क्लेरोडियम बन जाएगा. बीच में उसका हनीड्यू बनता है. हनीड्यू मतलब हनीड्यू मतलब दे विल सीक्रेट शुगरी लिक्विड. सो शुगरी लिक्विड देखो यहाँ पे शुगरी लिक्विड जैसा ये दिख रहा है ना, ये ले लो क्वेश्चन. देयर इज नथिंग बट शुगरी लिक्विड दैट विल अट्रैक्ट मोर इंसेक्ट. दिस वाज ऑल अबाउट द अर्गोट. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट वन इज अ नक्स होमिका. Plant is a nux homica. So it is also known as cow fig. It is also known as cow fig, semen, strychnine, Packer's button, bachelor's button, or homica. Remember the synonyms. Nux homica is also known as cow fig, semen, strychnine, or Packer's button, or bachelor's button. So what is the biological source of this nux homica? So it consists of dry seeds of Strychnus nux homica family Logenaceae. Strychnus or Strychnus nux homica family Logenaceae. आपको जैसे प्रोनाउंस करना है वैसे कर सकते. Either you can pronounce it as Strychnus or Strychnus. It is a dry seeds of Strychnus nux homica family Logenaceae. It should contain not less than 1.2% of total alkaloids calculated as strychnine. So then geographical source is not important, but it is found in the Sri Lanka, Australia, then South India, in the south part of India, in case of Tamil Nadu, Kerala, Malabar coast. It is also there. Odisha, in the forest of Odisha, in Mysore, Korpur, etc. So it is not much important. Then collection is also not much important because they are collected by local tribes. So the ripened fruits are collected and freed out of the pulp, and they are washed with water, separated and floating in the test. Collection is done in ये important है माइक्रोस्कोपी में दो ही पॉइंट है उसके, वो important है. So you can identify the nux homica seeds just by one important characteristic. That is nothing but it consists of epidermis strongly thickened and pitted lignified trichomes. So in case of seeds of this nux homica, you will find lignified trichomes in the epidermis followed by collapsed cell layer. That is the one of the most important characteristics. So lignified trichomes and collapsed cell layers you will find in the microscopy of this nux homica seeds. Okay. Then again endosperm, thick-walled polyhedral unlignified cells, alluring grains are there, oil globules are there, calcium auxiliary crystal and starch grains are absent. So just remember in the seeds you will have a lignified trichomes followed by collapsed cell layer. So इतना important है, एक बार पूछा था जी. उसके बाद में क्या है, chemical constituents. So that is the important part. Now in case of nux homica, again you have indole alkaloids. So there are numerous alkaloids in the nux homica, but important is these two, strychnine and brucine. These two alkaloids are very important. Strychnine and brucine, these two are very important alkaloids, which are indole alkaloids. Now along with these two, homocene is there, alpha and beta, colubin is there, then glycoside. One glycoside is also present in this nux homica, known as a logenaceae. So basically nux homica का जो प्लांट है वो अल्कोलॉइडल प्लांट है. तो आपको इतना याद रहता है कि ये अल्कोलॉइड प्लांट है और इसमें अल्कोलॉइड्स है, बट आपको ये याद नहीं रहता कि इसमें एक ग्लाइकोसाइड भी है. एंड जीपैट में वैसे ही क्वेश्चन पूछते कि आपको जो पता नहीं वो ही पूछेंगे, कि आपको जो पता है वो नहीं पूछेंगे. तो आपको क्या पता है यहाँ पे कि इसमें दो अल्कोलॉइड्स होता है, एक होता है स्ट्रिक्निन, एक होता है ब्रूसिन, और दोनों इंडोल अल्कोलॉइड्स. ये तो आपको याद रहेगा, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा क्या इसमें ग्लाइकोसाइड है which is known as a logenaceae, और ये क्वेश्चन पूछते. So which glycoside is present in the nux homica? Nothing but the logenaceae. Okay. Now again these strychnine and brucine, they are present in the different part of your seeds. So in the central part or endosperm, in the central part of your seeds or endosperm, so there is a presence of strychnine. Okay. So strychnine is present in the central portion or endosperm of seed, and this brucine is present in the peripheral part of the seed. Okay. So ये अगेन एक बार पूछा था. So which one, आपका जो स्ट्रिक्निन है, स्ट्रिक्निन कहाँ पे है, सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल पोर्शन में है, और या फिर आपका एंडोस्पर्म बोलते हैं उसको, सेंट्रल पोर्शन या फिर एंडोस्पर्म. तो उसमें स्ट्रिक्निन होता है और जो पेरिफेरल पार्ट होता है उसमें ब्रूसिन होता है. Along with these two, homocene is also present, alpha and beta, colubrin is also there, but there is one glycoside known as a logenaceae.
Loganin is the glycoside present in the your Naxomica. Now potency comparison between this strychnine and brucin. So as far as potency is concerned, brucin is more okay. So brucin is nothing but the dimethoxystrychnine. Strychnine and brucin ये दो अल्कोलाइड्स है. तो ब्रुसिन क्या है? डाइमिथॉक्सीस्ट्रिचनिन है एंड इट इज अ लेस 1/6 पोटेंट ऑफ स्ट्रिचनिन. मतलब स्ट्रिचनिन इज मोर पोटेंट देन ब्रुसिन. यहाँ पे स्ट्रिचनिन जो है फार्माकोलॉजिकली इट इज अ मोर पोटेंट देन योर ब्रुसिन. पोटेंट मीन्स उसका डोज कम लगता है. अगर पर्टिकुलर एक्शन दिखाना है आपको, दो ड्रग पर्टिकुलर एक्शन दिखाते हैं, मतलब दो ड्रग एज ए एंटीबायोटिक के, दोनों भी ड्रग माइक्रोबियल ग्रोथ इनहिबिट करते हैं, लेकिन एक ड्रग आपको 0.5 मिलीग्राम कॉन्सेंट्रेशन में ही करता है, एक ड्रग 1 मिलीग्राम में करता है. तो जो 0.5 वाला है वो मोर, मतलब इफ ए पर्टिकुलर डोज रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर एक्शन, दैट इज नथिंग बट द potency. If less dose is required, then more will be the potent. Strychnine is a more potent than brucin, and brucin is nothing but the dimethoxystrychnine. Now this brucin जो है, it is a 4 times more bitter than strychnine जो है, वो तो bitter है ही है, वो तो है ही bitter. लेकिन उससे ज़्यादा कौन bitter है? Brucin. Brucin is a 4 times more bitter than. So this is the important from chemical constituent. Now uses. Now these are the toxic alkaloids. So they are not medicinally used. Sometimes because of their bitterness, they are used as a stomachic and tonic. So what do you mean by stomachic? Stomachic means any drug that will increase gastric secretion, that is known as a stomachic. देखो आप कुछ कड़वा खाएंगे तो आपका एसिडिटी हो जाएगा या फिर आपका सिक्रेशन बढ़ेगा. जैसे आप कुछ कड़वा लेते हो आपके जीभ के ऊपर तो सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ता है, उसको बोलते हैं सियालोकॉप. अगर सलाइवरी सिक्रेशन बढ़ रहा है उसको बोलेंगे सियालोकॉप. अगर वो स्टमक का सिक्रेशन बढ़ाते हैं तो उसको बोलेंगे स्टोमैचिक. दोज एजेंट व्हिच विल इंक्रीज द acid formation in the stomach, that is known as stomachic. It is also used as a tonic. It is seen as stimulant, respiratory and cardiac stimulant. So it is a stimulant in nature. It is a seen as stimulant, cardiac stimulant, but it is a poisonous. So brucin is, again, this brucin is used for the denaturation of alcohol and non-edible oil. Then this strychnine is used as a dog poison, and it is also used for the standard for bitterness value. So these are the uses. Now substitute and allied drug, those are not much important, but at least है तो एक बार पढ़ लेते. So now original Naxomica is substituted with two varieties of Naxomica. First one is a Strychnus nux blanda. Strychnus nux blanda. The second one is a Strychnus potatorum. There are two varieties, Strychnus nux blanda and Strychnus potatorum. You can distinguish and all that. डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर क्या होता है उसका, वो सब बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं. ठीक है, सब कुछ लेते बैठेंगे तो अपना सिलेबस ही नहीं. क्या अलाइड ड्रग्स क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है का जो फार्माकोग्नोसी है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले उसका नेम, सिनोनिम, उसके बाद उसका बायोलॉजिकल सोर्स, उसके बाद उसका कुछ ड्रग का जियोग्राफिकल सोर्स, कल्टीवेशन, कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट, वो अपन लेंगे. उसके बाद उसका केमिकल कॉन्स्टेंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसका केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उसका जो भी अडल्ट्रेंट है वो एक थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी यूज है, बाकी कुछ नहीं. सो व्हेनेवर यू वांट टू स्टडी एनी फार्माकोग्नोसी ड्रग, you have to study the name, the synonyms, then biological source, and in some cases of drug, geographical source is also important, and your cultivation collection parameters are important. Then microscopy is important. Then chemical constant is important. Use and substituent and adulterant. That's all. आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है GPAT के लिए. अगर आपको सेमेस्टर के लिए पढ़ना है तो सब कुछ रखना है. Now see another chemical test for Naxomica. So there is one test known as a Mandine's reagent. This test. So in this test, the reagent is nothing but the ammonium vanadate and sulfuric acid. So the combination of ammonium vanadate and sulfuric acid, they will become a Mandine's reagent. ये important है. So your Naxomica will give purple color due to presence of strychnine in the endosperm. So ये जो seeds होते हैं, देखो ये seeds है, यहाँ पे seeds दिख रहे हैं आपको राउंड flat shift, ये Naxomica seeds. तो ये जो आउटर पोर्शन है दैट इज नोन एज पेरीफेरी, और ये सेंट्रल जो ब्लैक पोर्शन लग रहा है आपको दैट इज नोन एज एंडोस्पर्म. सो द स्ट्रिचनिन इज प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स and brucin is present in the peripheral part of the seeds. So in case of Mandel's reagent, you will get a purple color in the endosperm due to presence of strychnine, right? Rest of the tests are not much important. अगर आपको पढ़ना है तो आप, so again यहाँ पे नाइट्रिक एसिड टेस्ट है तो ये भी एक थोड़ा सा है.
जो है इसमें दो अल्कोलाइड्स होते हैं, स्टिचनिन एंड ब्रोसिन। तो स्टिचनिन क्या देगा आपका, ये टेस्ट पॉजिटिव देगा, कौन सा, मैंगनीज रिएजेंट। So manganese test will be given positive by strychnine. It will show purple color in the endoscope, right? Now, if you treat the seed with nitric acid, the yellow color will be there due to the brucine. So yellow color will be in the peripheral part of your, purple color will be in the central part of the seed. So ये दो अल्कोहल का ये दोनों टेस्ट है, उतना याद रखो। बाकी जो है वो यहाँ पे ये प्लांट है, these are the berries, ये ऐसा होगा, बाद में सीड्स बनेंगे उसके। Now next one is a phytostigma. Next one is a phytostigma. So now this phytostigma is also known as calabar. This phytostigma is also known as calabar bean or DL bean or chop nut or split nut. It is also known as chop nut or calabar bean. Phytostigma. So what is the biological source? So dried ripe seeds of Phytostigma venenosum. Phytostigma venenosum, and it belongs to family Leguminaceae. It should contain not less than 0.15% of total alkaloids. Okay. So rest of the points are जितना important है उतना ही लेंगे। So इसके ऊपर एक बार नाइपर में क्वेश्चन आया था, phytostigmine. So what is the chemical constant of this phytostigma? So it is mainly a phytostigmine, and that is a cholinergic drug. That is a cholinergic drug that will increase the cholinergic activity in your body. So phytostigmine is the main active constituent of, and this phytostigmine is also known as Esic. Remember, this phytostigmine is also known as Esic, and this was the question in NAP. Now it is present in the cotyledons of the seeds, and it should be protected from the air and light because it gets oxidized to rubeserine. Now because this phytostigmine gets oxidized to rubeserine, so you have to protect it from air and light. Okay, so phytostigmine is a light sensitive and air sensitive. Phytostigmine is also known as Esic. Now what is used? It is used in the ophthalmic as well as parasympathetic mimetic cases. It is an antidote for tricyclic antidepressant and your atropine. So in case of atropine poisoning, phytostigmine is, atropine क्या है, parasympatholitic है, और phytostigmine क्या है, parasympathomimetic है. So it is mimetic and your atropine is lytic. So that's why in case of atropine poisoning, this phytostigma is used as an antidote. Again, this is also used as an antidote for tricyclic antidepressants. Tricyclic antidepressant उसका mechanism क्या है, they will deplete the acetylcholine. So acetylcholine नहीं रहेगा, ये phytostigmine क्या करेगा, acetylcholine को. Now next one is areca nut. Areca nut means your betel nut. So it is also known as a betel nut. Areca nut, betel nut. आपका जो सुपारी रहता है, अगर आपको 5 सुपारी खाने का आदत है तो उसमें का जो सुपारी रहता है वो सुपारी है areca nut. तो वो उसमें एक अल्कोलॉइड, तो areca nut. So it is dried seed of Areca catechu. It is a dried ripe seed of Areca catechu family Palmi. It should contain not less than 0.25% of alkaloid known as arecoline. So this is alkaloid present in Areca nut. And it was also a question in GPAT as well as NAP. Which alkaloid is present in Areca nut? It is arecoline. So therefore arecoline, aracanidine, then guancine. These are the alkaloids present in the Areca nut. Aracin, arecoline, aracadine, guancine. Guancine is nothing but the tetrahydro. Okay, just remember the areca nut consists of arecoline alkaloids. That's it. बाकी उतना कुछ important नहीं है कि areca nut में कौन सा alkaloid होता है, arecoline. It is also known as betel nut. बस उतना याद रखो. उसका use क्या है, CLO क्या होता है, मैंने लास्ट स्लाइड में बोला है. Anything is able to increase your salivary secretion. के मुंह में पानी बढ़ा देगा तो उसको बोलेंगे CLO. Anything that will increase your salivary secretion, that is nothing but the CLO. And that's why this areca nut is a CLO. And anthelmintic means that will remove a worms from your intestine. So areca nut is CLO, anthelmintic, wormicide, and it is used in the veterinary practice. Veterinary medicine जो होता है उसमें ये डालते हैं, वैसे humans भी उसको खाते हैं. आजकल आता है इंडिया सुपर पेज. Now next one is the Raulpia. I think we have yesterday seen it, Raulpia, about Raulpia. जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी राउलपिया कवर किया है, तो ठीक है, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए. राउलपिया रूट, इट इज आल्सो नोन एज राउलपिया रूट, सर्पेंटिना रूट, छोला चांद, और सर्पगंधा, पगले की दवा, इंडियन स्नेक रूट, बिकॉज इट इज यूज्ड इन द साइकोसिस, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पगले की. एंड इट लुक्स लाइक अ स्नेक रूट. स्नेक्स का जैसे जो सांप होता है, सांप का जैसे स्ट्रक्चर होता है, सांप का जैसे शेप होता है, उसके शेप के इसके रूट्स होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सर्पगंधा. इट इज आल्सो नोन एज सर्पेंटिना रूट, राउलपिया रूट, और इंडियन स्नेक रूट, पगले की दवा. So Raulpia is nothing but the dried root of plant known as Raulpia.
Rauwolfia serpentina family Apocynaceae. First it was reported by the Dr. Rauwolf, that's why it is known as Rauwolf. ये रूट है, एक उसने खोजा था डॉक्टर राउलफ, तो उसको राउलफिया को, बाकी जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, माइक्रोस्कोपी इतना। इसमें क्या है, इसमें इंडोल अल्कलॉइड्स है, कौन से इंडोल अल्कलॉइड्स लाइक इंडोलिन, इंडोलिनिन, ऑक्सीइंडोल, फिडोइंडोल. So alkaloids mainly important are nothing but the reserpine and racemine. Reserpine and racemine. These two alkaloids are very important from this Rauwolfia alkaloid. They are nothing but the esters of methyl reserpate and trimethoxybenzoic acid. They are the esters. These alkaloids are the esters present in the plant. They are esters of trimethoxybenzoic acid. Again, asmelicine, serpentin, eomine. These are the other alkaloids. These Rauwolfia alkaloids are used in the antihypertensive. It is used as an antihypertensive, anxiolytic and mania. Antihypertensive means they will bring down your blood pressure. आपका blood pressure low करेंगे. Actually these Rauwolfia alkaloids they deplete the catecholamines. जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर है ब्लड प्रेशर के इंक्रीज करने के लिए उसको डिप्लीट कर देगा, उसको वहां से हटा देगा. That's why it will act as an antihypertensive. So they will deplete your neurotransmitter. It is anxiolytic and it is used in the mania, psychosis, okay, paglip. That's why it is known as paglip. So बाकी का जो allied drugs है एक जस्ट याद रखो, Rauwolfia humitoria, it is known as African Rauwolfia. Then ये जो है Paucine Stellia yohimbina, it is known as yohimb bark. Paucine Stellia yohimbina is known as yohimb bark. और then again Rauwolfia tetraphylla, Rauwolfia perkins, ये hydrated. इसमें एक बार तो ये मैंने कल दिखाया था आई थिंक Rauwolfia, ये Rauwolfia का प्लांट था, उसका रूट्स, ये देखो रूट्स जैसे लगता है स्नेक्स रूट, ये देखो ये सांप जैसे लग रहा है. That's why it is known as Indian snake. Now this is the areca nut, जो सुपारी बोला है, सुपारी का प्लांट ऐसा रहता है areca nut. ये मैक्सिममली यहाँ पे इंडिया के कोकन रीजन में पाया जाता है. यहाँ पे जो सिंधुदुर्ग अभी जो साइक्लोन आया था, साइक्लोन से बहुत बड़ा तबाही हो चुका है areca nut का प्लांट का, कैशू प्लांट का. उसके बाद जो क्योंकि कोकन एरिया जो है उसमें एरेका नट्स का खेती होता है, वहाँ पे मैक्सिमम एरेका नट्स उगाया जाता है. वहाँ पे आपका जो नारियल है, नारियल के पेड़ होते हैं, एरेका नट्स होते हैं. यहाँ पे कैशू के पेड़ होते हैं. आम जो है आजकल जो अभी चर्चा में मैंगो, वो मैंगो का भी वहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होता है कि वो साइक्लोन आया था. नेक्स्ट वन इज क्यूरारे. सो क्यूरारे, ये वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि अल्कोलॉइड्स they are different physiological actions. Okay, curare alkaloids they will have a paralyzing action on your muscle. So that's why these curare alkaloids जो ancestor थे अपने, वो क्या करते थे जब भी हंटिंग के लिए जाते थे जंगल में, तो वो जो उनका तीर रहता था, तो तीर के जो नुकीला रहता है, तीर का नुकीला पार्ट रहता है, तो उसके ऊपर क्यूरारे अल्कोलॉइड लगाते थे ताकि एक बार किसी को तीर लग गया तो वो पूरा पैरालाइज होके वही गिर जाए. वैसे वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे. तो जैसे वो शिकार को देखते थे वो जहरीला तीर छोड़ता था. जहर मतलब क्या, वही पैरालाइजिंग एजेंट था उसमें. सो क्यूरारे इज नोन एज अ साउथ अमेरिकन एरोरूट पॉइजन, साउथ अमेरिकन एरोरूट पॉइजन, एंड इट इज नथिंग बट द प्लांट बिलोंगिंग टू लोगेनेसी फैमिली और मिनिस्पर्नेसी फैमिली. ये 2-3 प्लांट रहते हैं उसमें, डिफरेंट 2-3 फैमिली के प्लांट है उसमें. तो ये तो उसमें एक्टिव कॉन्स्टेंट होता है आपको. व्हाट इज द केमिकल कॉन्स्टेंट? D-tuberculin. D-tuberculin or tuberculin is the alkaloid which is a present in this curare plant. Curare, tuberculin is a benzyl isoquinoline molecule. ये छोड़ो, बस इतना याद रखो कि tuberculin नाम का alkaloid curare में होता है और that has a paralyzing, वो paralyze करता है मसल. So it will act on a neuromuscular junction and it will block the neuromuscular junction. That's why this curare D-tuberculin is a skeletal muscle relaxant, but it is a paralyzing agent. इतना याद रखो. Next drug is a Dhatura. So Dhatura is also known as a angel's trumpet. This was question in GPAT. So angel's trumpet is a synonym of Dhatura. कैसा होता है, क्या होता है, दिखा रहा हूँ मैं आपको. आपने देखा होगा आपके आसपास. ये जो प्लांट है ये धतुरा का प्लांट है. कौन सा? ये आपने बहुत बार देखा होगा धतुरा. सो इसमें भी बहुत सारे ट्रोपेन अल्कलॉइड्स होते हैं, वो देखेंगे अभी. सो धतुरा इज आल्सो नोन एज एंजल्स ट्रम्पेट एंड दिस वाज क्वेश्चन इन जीपैट. एंजल्स ट्रम्पेट इज अ सिनोनिम ऑफ. सो व्हाट इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ दिस धतुरा? इज नथिंग बट द ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स. पूरा प्लांट ही होता है. सो इट इज अ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ धतुरा मेटल फैमिली Solanaceae. It belongs to family Solanaceae. So you must able to recall
जिसके भी फैमिली सोलेनेसी है उसमें कौन सा टाइप ऑफ उसमें कौन सा ये रहेगा स्टोमेटा, उसमें रहेगा आपका अनिसोसाइटिक स्टोमेटा. Okay, so all plants belong to family Solanaceae that will consist of anisocytic stomata. Okay, or it is also known as cruciferous stomata. ये माइक्रोस्कोप में आ जाएगा. So it is a dried leaves and flowering top of Datura metal family Solanaceae. It should contain not less than 0.2% of total alkaloids calculated as L-hyoscyamin. Okay, ये geographical source is not important. Cultivation collection छोड़ दो. So microscopy, it is a dorsiventral lip. What is meant by dorsiventral lip? Dorsiventral lip means the lip will consist of stomata on both sides. Both epidermis पे अगर upper epidermis lower epidermis दोनों के epidermis पे stomata है तो उसको बोलेंगे dorsiventral. अगर एक ही है एक ही epidermis पे है तो उसको बोलेंगे isobilateral. So there are two types of lip, dorsiventral and isobilateral. So it is a dorsiventral lip means इसके दोनों साइड पे stomata है. So anisocytic और cruciferous stomata मैंने ये बोला था. So it is a solanous plant, that's why it will have anisocytic or cruciferous stomata, both covering and gallanotrichomes are there. Then it will have clusters of calcium oxalate crystal. So these are the three important points from microscopy. That's it. Now chemical constants. What are the chemical constants? So here are hyoscine. Hyoscine is the main alkaloid. That is a tropane alkaloid. Hyoscine is the main alkaloid and it is known as scopolamine. Okay. So hyoscine, it is a scopolamine. It is a main alkaloid. Okay, so it is a derivative of L-hyoscyamin, that is scopolamine, and if it is present in the racemic mixture, it is known as atropine. So atropine is nothing but the racemic mixture of L-hyoscyamin. ये अपन ने belladonna में देखा था. So when we was studying belladonna in the last lecture, we have seen L-hyoscyamin is nothing but the if it is a D plus L-hyoscyamin, then it is a atropine. Atropine is a racemic mixture of L-hyoscyamin. Remember, it was question in Niper as well as GPAT. ठीक है, धतुरा, बेलाडोना, उसके बाद और दो तीन प्लांट है, स्ट्रोमियम है, उसके बाद आपका और एक प्लांट है, तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, वो आप बुक में दिया है मैंने, उतना देख लो. ठीक है. नाउ दिस धतुरा इज अ पैरासिम्पेथोलाइटिक. सो इट इज अ पैरासिम्पेथोलाइटिक. इट इज अ पैरासिम्पेथोलाइटिक मींस इट विल ब्रेक डाउन द एक्शंस और इट विल ब्लॉक द एक्शंस व्हाटएवर एक्शंस शोन बाय द पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम. जब भी अपन देखेंगे पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम तब मैं बोलूँगा आपको कोई पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्शन क्या होता है, सिंपैथेटिक का एक्शन क्या होता है, और एक बार आपको वो समझ में आए तो आपको ड्रग भी समझ में आती है. तो ये बाद में देखेंगे. नाउ इट इज अ पैरासिम्पेथोलाइटिक सीन डिप्रेशन. इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कफ, मोशन सिकनेस. एज इट इज सीन एज डिप्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड इन द मोशन सिकनेस. देन इट विल डिक्रीज ऑल द secretions. It will decrease your gastric acid secretion, duodenal secretion, and that's why it's used in the treatment of duodenal ulcer. Okay, right? Now there is one specific test for identification of tropane alkaloids. जितने भी tropane alkaloids है, उसका एक identification करने के लिए एक टेस्ट है, उसको बोलते हैं Vitali-Morin टेस्ट, Vitali-Morin टेस्ट और Vitali-Morin reagent. So उसमें क्या होता है? Vitali-Morin reagent में क्या होता है? ये देखो कि आपको propane alkaloids plus fuming nitric acid, and you have to evaporate this with dryness, and then you have to add methanolic potassium hydroxide and acetone. Okay, then you evaporate, will get a violet color. That is due to the presence of propane base. Okay, so ये इतना याद, ये पूरा टेस्ट याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट याद रखो कि Vitali-Morin टेस्ट इज फॉर tropane alkaloids. Okay, जैसे मैंने बोला है कि आपको जो टेस्ट बोला है, जैसे आपका कैफीन है, कैफीन मतलब जो प्यूरिन अल्कोलाइड्स है, प्यूरिन टाइप ऑफ अल्कोलाइड्स, दे विल गिव यू मिरोक्साइड टेस्ट. आपका प्रोपेन अल्कोलाइड्स दे हैव अ स्पेसिफिक टेस्ट नोन एज Vitali-Morin टेस्ट. आपका जो आर्गोट अल्कोलाइड है उसके लिए कौन सा है टेस्ट, नहीं बोला था आपको, वैन वुर्क रिएजेंट. ओके, सो ये थोड़ा सा याद रखो आप. मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन का भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट आ सकता है. नाउ नेक्स्ट वन इज एकोनिट. एकोनाइट, इट इज नोन एज एकोनिट रूट और बचनाक. It is known as aconite root, bachnak or mokshoot or Hirar's cow or mouse bane. Okay, and what is the biological source? It is a dried root of Aconitum napellus. Dried root of Aconitum napellus family, Raunoculaceae. Okay, it contains not less than 6.6% of alkaloids known as a aconitin. Okay, so it is a poisonous plant again. Aconite is a poisonous plant. Okay,
Geographical source बाद में पढ़ लेना, उतने पढ़ रहे. Now chemical constant aconitin, it consists of aconitin alkaloid, right? So aconitin on hydrolysis will give you benzyl aconine base plus acetic acid. Now again this benzyl agonine on hydrolysis will give you aconine plus benzoic acid, and this is hydrolysis product. This is important. Okay. Now other alkaloids present in this aconite plant, that is nothing but the hypoconitin, neopilin, then nepilin, neolin, and serpentine, epitrin. Okay. So just remember aconitin. Aconitin is the main alkaloid present in aconite, and it is a poisonous plant. Okay. So it is a highly poisonous drug, and it is used only externally in the form of liniments for the treatment of neurological problems in the Ayurveda. Then rheumatism, inflammation, to treat the rheumatism, inflammation in Ayurveda. It is not used nowadays. It is only used in the homeopathic medicines. So होम्योपैथी का जो जितना मेडिसिन है इसमें यूज किया जाता है आजकल भी, लेकिन एलोपैथी वगैरह में कुछ इसका यूज नहीं. ठीक है, आजकल तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है एलोपैथी और आयुर्वेद. बाबा रामदेव बाबा बैठ गए सबके साथ, बाबा रामदेव बैठ गए सबके साथ, बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है. ठीक है, सो it has a cardiac depressant property. It will depress your heart. Nowadays its use is restricted only to homeopathic medicine. That's it. So उसके substitute कौन सा है? जापानीज अकोनिट है, that is aconitum unicatinum, aconitum unicitinum. इंडियन दो वैरायटी है उसका, जापानीज अकोनिट है और एक इंडियन अकोनिट है. जापानीज अकोनिट क्या है? aconitum unicitinum, aconitum unicitinum, and इंडियन अकोनिटम क्या है? aconitum chasmanthum, aconitum chasmanthum is the Indian aconite. That's it. यहाँ पे उतना याद रखो कि एकोनिट जो है, एकोनिट इज हाईली पॉइजनस प्लांट, उसका सिग्नल से याद रखो, और बाद में सिर्फ उसका उसमें क्या है? एकोनिट, एकोनिटिन, एकोनिटिन नाम का अल्कलॉइड है. एकोनिटिन नाम का अल्कलॉइड जो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या देगा आपको? बेंजाइल एकोनिन बेस देगा, उसके बाद एसिटिक एसिड देगा. अगर ये बेंजाइल एकोनिन फिर से अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेंजाइल इकोनिन, तो वो हाइड्रोलाइसिस करेंगे एकोनिन बेस देगा आपको और बेंजाइल. दैट्स इट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं. और नेक्स्ट वन इज अ कोका. कोका, कोका कोला, वो वाला कोका कोला नहीं, कोका कोला. कोका अलग प्लांट है, कोला अलग प्लांट है. ये दो प्लांट है एक्चुअली, ऐसा मत मतलब. इसमें कैसा है? दो प्लांट है, कोका अलग है, कोला अलग है. ठीक है वो बुक में भी दिया है. नाउ विल सी द कोका. सो कोका क्या है? कोका इज आल्सो नोन एज अ कोका और चॉकलेट, राइट? सो इट इज अ dried leaves of, it is a dried leaves of erythroxylon coca, erythroxylon coca, dried leaves of erythroxylon coca which is known as a Bolivian or Himaco coca. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है, ये नाइपर में 100% यूज करें. तो erythroxylon coca is known as a Bolivian coca और Hunoco coca, Bolivian और Hunoco coca, that is erythroxylon coca. Now there is another variety known as erythroxylon truxilens, erythroxylon truxilens, which is known as a Peruvian or Truxilococa. So erythroxylon truxilens is a Peruvian or Truxilococa. Erythroxylon coca is nothing but the Bolivian or Hunoco coca, Bolivian or Hunico coca, Hunoco coca. So erythroxylon coca Bolivian, erythroxylon truxilens it is a Peruvian. So as the name indicates, it is found in South America, Peru, Bolivia, like that. Okay. Family Erythroxylaceae. ये एक नाइपर में आया था, बहुत 2-3 बार आया था कि which one is a Bolivian, which one is a Peruvian. So erythroxylon coca is a Bolivian, erythroxylon truxilens is a Peruvian or Truxilo. Remember. Now forget about the cultivation collection, but just remember as this coca plant consists of a cocaine, that's why it comes under Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act. So the cultivation will be again governed by the government under the NDPS Act. Okay. Now this coca consists of isobilateral leaves, not a dorsimetry. It's a isobilateral leaves. Presence of parenchyma under both epidermal layer. Then
co-constituent of parasitic stomata, parallel cell stomata, parasitic or parallel cell stomata, or it is also known as rubeaceous stomata because the family is rubeaceae. Most of the rubeaceous family contain this parasitic stomata. Okay, so absence of trichome, starch grain, and stone cells are rarely present. Calcium oxalate crystals are present in the epidermal cell. So just remember, parasitic stomata are present in the coca. Okay, and it is a isobilateral leaf. Then what is the chemical constituent? That is the most important part. So chemical constituents 7 to 0.7 to 1.5% total alkaloids. Main alkaloid is a cocaine. Cocaine is a main alkaloid. Cocaine is nothing but the methyl benzoyl iguanine. So it is a combination of 3: methyl benzoyl iguanine. Okay, this is a cocaine. Now again there is another one, cinnamyl cocaine. So methyl cinnamyl iguanine. Okay. Then again alpha-troxylin is the another alkaloid. So there are 3 alkaloids: cocaine, cinnamyl cocaine, alpha-troxylin. These 3 are the main alkaloids. Rest of those are secondary. Okay, so ये 3 main है: cocaine, cinnamyl cocaine, alpha-troxylin. So cocaine क्या है? methyl benzoyl iguanine. cinnamyl cocaine क्या है? methyl cinnamyl iguanine. alpha-troxylin क्या है? methyl troxyloyl iguanine. मतलब सिर्फ बीच में का वर्ड जो है वो चेंज है, और वो भी अकॉर्डिंग टू द नेम. ठीक है, कोकेन में क्या है? बेंजाइल है. सिनामिल में क्या है? सिनामिल है. ठीक है, ट्रोक्सिलिन में क्या है? ट्रोक्सिलोइल है. ठीक है, यहाँ पे देखो आप, मिथाइल बेंजाइल को इगोनिन. इगोनिन इज अ बेस, प्रोपेन बेस. It is a ester, methyl ester of benzoic acid and iguanine. Methyl ester of benzoic acid and iguanine. It is a cocaine. It is cinnamyl ester of iguanine with methyl cinnamyl ester. Okay, it is a ester of methyl troxyl, like that. Propogane, benzyl tropane, benzyl iguanine, hygrine. They are the secondary alkaloids. इसमें 3 अल्कोलाइड्स मेन है: कोकेन है, सिनामिल कोकेन एंड अल्फा-ट्रोक्सिलिन. So cinnamyl cocaine on hydrolysis will give you iguanine, methyl alcohol and cinnamic acid. Cocaine on hydrolysis will give you iguanine, methyl alcohol and benzoic acid. ठीक है, ये hydrolysis प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया था इसका. Okay, so cocaine is a benzoic acid, cinnamyl cocaine is a cinnamic acid, okay, alpha-troxylin is a troxyloic acid, alpha-troxylic acid. Okay, तो बाकी सब सेम है. ये देखो, इगोनिन, मिथाइल अल्कोहल, इगोनिन, मिथाइल अल्कोहल, ये तीनों सेम है. तीनों में सिर्फ सिनामिल कोकेन में क्या होगा? सिनामिक एसिड होगा. कोकेन में क्या होगा? बेंजोइक एसिड होगा. अल्फा ट्रोक्सिलिन में क्या होगा? ट्रोक्सिलिक एसिड होगा. ठीक है, इट इज अ सिंपल. ये नाइपर में पूछते हैं, जीपैट में भी कभी कभार पूछ लेते. सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कोका? सो कोकेन will act as a local anesthetic, it is a stimulant, okay, restorative, and cocaine is a drug of addict. Remember. Now rest of the things are not important. अगर आपको पढ़ना है तो बुक में. Okay. Now next one is the cinchona alkaloids. Cinchona alkaloids, or it is a quinoline alkaloids. We have seen tropane alkaloids, we have seen isoquinoline alkaloids, we have seen indole alkaloids. आपने देखा है इंडोल किस में है? इंडोल है आपका आर्गोट का प्लांट में है, और आपका ये जो बिंका प्लांट है उसमें है. ठीक है, आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड्स किस में है? कि ओपियम का जो प्लांट है आपको उसमें आइसोक्विनोलिन अल्कोलाइड्स. और ट्रोपेन अल्कोलाइड किसमें है? ट्रोपेन अल्कोलाइड है आपका सोलेनेसी फैमिली, जैसे आपका धोत्रा हो गया, स्ट्रोमियम हो गया, ठीक है, बेलाडोना हो गया, इसमें आपका ट्रोपेन अल्कोलाइड्स है. अभी क्विनोलिन अल्कोलाइड्स किसमें है? क्विनोलिन अल्कोलाइड है आपका सिंकोना में. So cinchona is known as a jesuit bark or Peruvian bark. Remember, jesuit bark or Peruvian bark. So cinchona is a anti-malarial. आपको जैसे cinchona का नाम आना चाहिए तभी आपको immediately आना चाहिए कि it is a anti-malarial plant. Okay? So it is jesuit bark or Peruvian bark. So what is the biology of dried bark of Cinchona calicea? Dried bark of Cinchona calicea, Cinchona ledrigiana, Cinchona officinalis, Cinchona succiroba, all belongs to family Rubiaceae. And it should contain not less than 6% of total alkaloids of cinchona. Okay, so Cinchona calicea, Cinchona ledrigiana, Cinchona officinalis, Cinchona succiroba, all belongs to family Rubiaceae. Okay, so इसमें क्या होता था? इसके पीछे एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि मलेरिया हो गया था, बुखार हो गया था लोगों को, और समझ में आता कैसे करें, क्या करें. सो ये एक साइंटिस्ट है, नोन एज जेसुट.
तो जेसुट नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया कि उसने ऑब्जर्व किया था कि एक तालाब है, तालाब के पास ये सिंकोना का पेड़ है, और वो सिंकोना के पत्ते वो तालाब में गिरते थे, ठीक है। और तालाब में सिंकोना के पत्ते गिरे तो सिंकोना का जो भी एक्टिव कांस्टेंट है पत्ते में, लीव्स में, जैसे आपका क्विनिन है, सिंकोनिन है, वो सब क्या आता था, वाटर में आता था। और वो वाटर वो तालाब का पानी जो भी पिएगा उसको बुखार नहीं होता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वो जेसुट नाम का जो है 1630 उसने उसको ऑब्जर्व किया, और तब से लेके वो तालाब का पानी देना था, वो होली तालाब, उसको होली तालाब बोलने लगे। लेकिन वैसा नहीं था, वो उसमें क्या था कि सिंकोना के जो पत्ते गिरते थे ऊपर से झाड़ के, वो पत्ते में जो एक्टिव था वो एक्टिव वाटर में आ गया, एक्सट्रैक्शन हो गया उसका, नेचुरल एक्सट्रैक्शन, और वो दैट इज एक्टिंग एज अ एंटी मलेरिया ड्रग एंड एक्टिंग अगेंस्ट द फीवर, ठीक है। तो ये पेरू में हुआ था, ये उसका जोकब के सोर्स वगैरह देख लेना आप। वैसे इंडिया, बोलीविया, कोलंबिया, पेरू, तांजानिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, नीलगिरी हिल्स, कोयम्बतूर, ये जो है आपका साउथ में, उसमें ये पाया जाता है। बंगाल में भी है, दार्जिलिंग में है। कल्टीवेशन कलेक्शन इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, इसका आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हो। आप माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में इसका एज अ बार्क है, तो आपको क्या करो, एक डिप्लोमा का बुक आता है, एक बार अगर माइक्रोस्कोपी आपको अच्छे से याद रखना है ना, तो आपको ये कॉमन चीजें कौन सा है ये समझ में आना चाहिए कि लीफ में क्या है, इपिडर्मिस, डर्मिस, उसमें फिर वैस्कुलर बंडल्स, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट, क्रिस्टल, स्टार्च ग्रेन्स किस में लेगा, ये लीव्स में लेगा। अभी ये क्या है, बार्क है, बार्क में क्या है, बार्क में है इपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, राइट, डर्मिस ने यहाँ पे, और उसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल भी रहेंगे, लेकिन इसमें स्टार्च ये अपना, इसमें ट्राइकोम्स नहीं होगा, किसमें, बार्क में आपका ट्राइकोम्स नहीं होगा, लीव्स में आपका ट्राइकोम्स होगा, लीव्स में आपका क्लोरोफिल होगा, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल नहीं होंगे, यहाँ पे ये मेडुलरी थ्रेड्स, ठीक है। और इसमें स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, और इसमें फ्रैक्चर भी रहता है, ये सब बाद में बाकी बारे। यहाँ पे कॉर्क, यहाँ पे क्या रहेगा, कॉर्क रहेगा, कॉर्टेक्स रहेगा, एंडोस्पर्म रहेगा, ठीक है। तो कॉर्क सेल फॉलोड बाय फेलोडर्म, कॉर्टेक्स, सेवरल सेकेंडरी चैनल, फ्लोएम फाइबर्स, मेडुलरी रेज, ठीक है। ये मेडुलरी रेज सिर्फ आपको बार्क में ही मिलेंगे, आपको लीव्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये कॉर्क सेल, कॉर्टेक्स आपको बार्क में ही मिलेगा, या फिर स्टेम में मिलेगा, आपको लीव्स में नहीं मिलेगा। तो आपको इस कॉमन चीजें थोड़ा सा याद रखना है। तो इसमें इडियोब्लास्ट कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है, सबसे मेन चीज। सो as per as microscopy of this synchrona is concerned, you will find idioblast calcium oxalate, which is a specific characteristic of synchrona. Starch is also present. Stone cells are rarely present in this piece of the blood. That is important. The last line जो है वो important. Idioblast calcium oxalate, ये एक बार पूछा था जीपैट में, नाइपर में तो हमेशा पूछते हैं। Now, what is the chemical constant present in this synchrona? So here synchrona you will have isoquinoline type of alkaloids. Okay, isoquinoline type of alkaloids. Quinoline मतलब 1,3 नाइट्रोजन होता है, और इसमें 1,2 नाइट्रोजन होता है, इसलिए isoquinoline बोलते हैं। आप जब भी आप स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको समझ में आएगा। So important alkaloids like quinine is there. Quinine, quinidine, synconine, synconidine, quinine, quinidine, quinidine, synconine, synconidine. Okay, so these are the main alkaloids. Then less important alkaloids are the quinacin, syncosinin, hydroquinacin, then ohmog, synconidine. These are the less important, but quinine, quinidine, synconine, synconidine, these are the most important. So quinine, quinidine, they are the stereoisomers of each other. Synconine and synconidine also they are the isomers of each other. Okay. Now, out of all the species, Syncona calyzea, Syncona saxiroba, Syncona ladrigiana. Okay, so out of this Syncona ladrigiana consists of the highest amount of alkaloid. It will have up to 14% of alkaloid. So they can ask you question, which variety of Syncona will have a highest alkaloid. So Syncona ladrigiana, Syncona calyzea, Syncona saxiroba, Syncona ladrigiana, Syncona officinalis. ये varieties है Syncona की.
उसमें सिंकोना लेडिजाना जो है उसमें सबसे ज़्यादा अल्कोलाइड्स होते हैं. Okay, so apart from alkaloids, it has a quinic acid, then syncotanic acid, means इसमें tannins भी होते हैं. Syncotanic acid decomposes into insoluble synconaldehyde due to its phlebotomy. Glycoside is present in this syncona is a quinoline. Okay, so actually it is alkaloidal plant, but it has also one glycoside, right? Again, so what is used? So it is used as an anti-malarial, anti-rheumatic. So it is used in the malaria treatment of malaria. It is an anti-rheumatic. It is also used in the rheumatoid arthritis. So क्लोरोपिन जो ड्रग है वो सब नेचर से ही आया है, वहाँ पे किसी ने लैब में नहीं बनाया उसको. आजकल तो लैब में बन रहा है, लेकिन जहाँ से आया है वो नेचर से ही आया है. ये जो प्लांट है उसी से आइसोलेट किया था क्लोरोपिन. ठीक है, अभी लैब में बनते हैं. उसके बाद उसका 6 हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आया जो कि आजकल कोरोना के इनिशियल स्टेज में यूज करते हैं, लेकिन वो उतना कारगर नहीं. ठीक है, that was used for prophylaxis only. Okay, so now this chloroquine is also used in the rheumatoid arthritis. Now this quinine जो है, quinine hydrochloride और quinine sulfate, this is a cardiac depressant. This is a cardiac depressant. That's why this quinine is also used in the cardiac arrhythmia. Okay, so class second drug, quinine. Okay, so anti-malarial, anti-rheumatic, then anti-arrhythmic, then anti-rheumatic. It is used. Now, what are the substituents and adulterants? So Cypria bark and false Cypria bark. This is very important. नाइपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता जाता है. Okay, so there are two types of bark, Cypria bark and false Cypria bark. Now Cypria bark is nothing but the Rhamyza peduculata. Okay, so first one is Cypria bark. Cypria bark is nothing but the Rhamyza pedunculata. It is a Cypria bark. Okay, so it is a copper red in color. The bark is copper red in color, and drug can be distinguished by numerous stone cells microscopically. ठीक है, तो आप इतना याद रखिए, उसके दो अडल्टरेट होते हैं, Cypria bark एंड एक होता है false Cypria bark. तो Cypria bark को it is nothing but the Rhamyza pedunculata and false Cypria bark is nothing but the Rhamyza prodiana. Okay, so false Cypria bark is a Rhamyza prodiana. So it consists of alkaloid called as cusconidine. False Cypria bark consists of alkaloid cusconidine. इसका क्वेश्चन नाइपर में आता है. So false Cypria bark is containing cusconidine, cinchonine and cinchonamide. Okay, but no quinine. So false Cypria bark में quinine नहीं होता है, इसमें होता है cusconidine, cinchonine, cinchonamide. Okay, तो ये क्वेश्चन आता है एक पर्टिकुलर, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. So false Cypria bark is nothing but the Rhamyza prodiana. Cypria bark is nothing but the Rhamyza pedunculata. Now chemical test. Okay, so out of all these chemical tests, there are two tests which are important. First one is this Talagang test, and this one is last one is this under UV. Okay, so in case of Talagang test, with the bromine water and dilute ammonia, drug will show emerald green color. This was question in GPAT 20, I think. So 21 or 20, emerald green color. Okay, so Talagang test. This is a specific test for purine type of alkaloid. Purine type of alkaloids are not biosynthesized from amino acid. Remember, okay? पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि क्विनिन और जो प्यूरिन टाइप ऑफ अल्कोलाइड्स है, क्विनिन सॉरी वो क्या पिन है, ठीक है. सो इसमें Talagang test है. Talagang test is a specific test for your quinine alkaloids. Okay, right? ये नेक्स्ट वन इधर हो गया. इतना याद रखो कि Talagang test is an important test. It is a characteristic test for these synchron alkaloids, right? Then your quinine under UV light will show blue fluorescence. That's बाकी का जो है उतना important नहीं. Now you can see here, these are the synchronatories.
इसका जो बार्क होता है इसको पीलिंग करके बार्क निकालते हैं, तो ये बार्क होगा आपका सिंकोना बार्क। इसका पीलिंग प्रोसेस होता है ये झाड़ का पूरा साल निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं बार्क। Now there are 2-3 few modules, we will finish that. Okay, so now is the amino alkaloids or alkaloidal amines. We have seen in the first lecture alkaloidal amines or amino alkaloids. They are biosynthesized from which amino acid? Phenylalanine, right? ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा बॉस, मैं ही रिवाइज कर जा रहा हूँ। So epetra is nothing but it is known as a mahang. Everything is okay. Am I audible? ठीक है। So alkaloidal amines or amino alkaloids or they are proto-alkaloids. They are proto-alkaloids. आपने देखा था पहले लेक्चर में ही, जैसे इपेट्रिन का एग्जांपल दिया था, these are proto-alkaloids means they are biosynthesized from amino acid, but the nitrogen will not be there in a heterocyclic reaction. Okay, so mahang, epetra is also known as a mahang. Epetra is also known as mahang. This was question in GPAT 2018. Mahang is known as epetra. Okay, so what is epetra? It is a dried young stem of Epetra gerardiana. It is a dried young stem of Epetra gerardiana. Okay, family Epetraceae, or it is also known as Gentaceae. Epetra gerardiana. Okay, family Epetraceae or Gentaceae. Nebrodensis or it should contain not less than 1% of total alkaloids calculated as ephedrine. Okay, so this plant basically found in the desert area. Okay, so ये plant जो है desert में होता है, जैसे आपका राजस्थान हो गया, राजस्थान में होता है। Okay, so चाइना में होता है, ये पाकिस्तान में होता है, नॉर्थ। तो it is found in the desert. So China, Pakistan, northwest part of India, that is Rajasthan, and then Spain, Yugoslavia. So it is cultivated. ये कल्टीवेशन वगैरह छोड़ दें। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर में एक ही इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज sunken tomato. Sunken type of stomata are present in the epetra. So what is sunken stomata? It is a special type of stomata. It is a special type of stomata that are present in the few plant which are grown only in desert. जो desert में plant होते हैं उनके इसमें इस टाइप का स्टोमेटा होता है. These are the special tomato. They are the special type of tomato to prevent the excessive water loss. जो डेजर्ट में क्या होता है, ऑलरेडी पानी नहीं है वहाँ पे, और जो पानी है वो प्लांट से अगर इवेपोरेट हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, फिर एक तो पानी नहीं है वहाँ पे और ऊपर से ये, तो ये प्रिवेंट करने के लिए there are specialized type of stomata to prevent the water loss from the plant, and those stomata is known as a sunken type of stomata or sunken type of stomata. sunken और sunken जो भी आपका बोलना है बोलो, ठीक है. So sunken type of stomata is a important feature of your epetra. ये epetra भी होते हैं, ठीक है. So non-liquid pipette fiber और calcium oxalate ये वो बाकी इधर लाना. Now chemical constant. So ephedrine is the main alkaloid. Norepinephrine, N-methylephrine, and pseudoephedrine. All these alkaloids are present. So pseudoephedrine is nothing but the analog of ephedrine. Okay. So macrocyclic alkaloid, ये छोड़ने बाकी कुछ नहीं. Now this alkaloid is a sympathomimetic. It will show effect like sympathetic nervous system. It will mimic, it will copy, it will mimic the actions produced by sympathetic nervous system. That's why it is sympathomimetic. It is used to treat the asthma as it is a bronchodilator. Ephedrine sulfate जो कब से होता है उसमें ephedrine sulfate होता है, ठीक है. और pseudoephedrine भी आजकल है, pseudoephedrine का भी सिरप मिल रहा है आजकल. So they are used as a bronchodilator in the cup syrup. Okay. So this taste is not much important. So this is the ephedra plant. See, you can see here, this is the ephedra plant. ऐसे होता है. Now next one is a colchicum. Next one is a colchicum.
So it is known as a meadow saffron seeds. Synonyms are very important. Meadow saffron seeds, autumn crocus, naked boys. Naked boys में से कोई देखना नहीं चाहेगा, लेकिन प्लांट का नाम है, क्या कर सकते हैं. So naked boys, sigden, meadow saffron seeds, autumn crocus, naked boys, and sigden. Okay. So what is the biological source? It is the dried seeds of Colchicum luteum. Dried seeds of Colchicum luteum or Colchicum autumnale. Colchicum luteum or Colchicum autumnale family Liliaceae. Okay. So it is its corms are commercially used. Corms means क्या? जैसे होता है ना जिंजर का आप अगर उसको पानी में रखेंगे या फिर उसको सॉइल में डालेंगे तो उसके वहां से एक छोटा सा उसको ये मिलता है, अंकुर होता है उसको अंकुर को बोलते हैं कॉर्न. ओके. कल्टीवेशन करेक्शन इज नॉट मच इम्पोर्टेंट. सो इसमें क्या होगा माइक्रोस्कोप में टीएस में, इसमें होगा अल्जीरियन ग्रेन्स. ये भी इम्पोर्टेंट है. Chemical constituents, these are important. So the seeds of Colchicum consist of up to 0.8% colchicine. Colchicine is the main alkaloid. Okay. Corm consists of 0.6% colchicine and democolchicine. जो कॉर्म होते हैं, कॉर्म जो अंकुर होते हैं, अंकुर में कम रहता है, सीड्स में ज्यादा रहता है colchicine. Now both these alkaloids consist of tropolone and cycloheptadine. Both these alkaloids consist of tropolone and cycloheptadine, all one ring. In cycloheptatrine, all. Cycloheptatrine, cyclo means cycloheptane ring होगा उसमें, जो 3 रिंग होंगे cycloheptane trine में, trine all, alcohol भी होगा. So tropolone and cycloheptatrine all ring structure. Now this colchicine is a yellow colored amorphous powder. Remember, colored alkaloids berberine and colchicine are yellow in color. So पहले लेक्चर में बोला था मैंने, ये यहाँ पे भी आ गया. Colchicine is a pale yellow crystal amorphous powder. Bitter taste, odorless. Under UV light, colchicine is converted into pneumocolchicine. बस इतना ही. Uses क्या है उसके? This colchicine is used in the treatment of gouty arthritis. इसका अगर गाउट है, जॉइंट स्वेलिंग है, पेन है, रोमेटिज्म है, उसमें यूज करते हैं. और दिस colchicum also has an anti-cancer activity, and this colchicine is widely used in the plants to induce polyploidy. This was question again in the Niper. So colchicine is used to induce the polyploidy. Polyploidy means what? To increase the number of chromosomes. Polyploidy means to increase the number of chromosomes. So colchicine is used in the horticulture. जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है प्लांट्स का, उसमें यूज करते हैं. Colchicine is used in the polyploidy to induce the polyploidy to increase the number of chromosomes. Therefore, it is used in the horticulture and cultivation of medicine. बाकी कुछ ज़्यादा important नहीं, छोड़ दो. Chemical wasting नहीं. Next one is last one is steroid. अभी एक तो drug बन गया. Next one is steroidal alkaloid. So as the name indicate, this plant will have a steroidal alkaloid. मतलब alkaloid का नेचर क्या होगा? स्टेरॉइड होगा. ठीक है, तो उसमें स्टेरॉइडल alkaloid होगा. So the name of plant is kurchi or kurchi bark. Okay, so kurchi bark, it is also known as a holerina. Okay, kurchi bark is known as a holerina. What is the biological source? It is a dried bark of Holerina antidysentrica. Holerina antidysentrica family Apocynaceae. As the name indicates, antidysentrica means dysentery. Anti means opposite. मतलब opposite dysentery के opposite action है उसका. मतलब it is used in the dysentery. That's it. Holerina antidysentrica Apocynaceae. It should contain not less than 2% of alkaloids. बाकी ये कल्टीवेशन जोग्राफ का सब छोड़ दो, इम्पोर्टेंट नहीं. माइक्रोस्कोपिक भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. इतना याद रखेंगे, प्रिज्मेटिक कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होता है इसमें कुर्ची में. नाउ केमिकल कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर वाज क्वेश्चन इन जीपीएट 2019 also from this. It consists of carbon 21 group of steroid alkaloids.
It consists of a carbon 21 group of sterile alkaloids. Mainly, main alkaloid, it is nothing but the conacein. It is known as a conacein. 20 to 30% alkaloid present in kurchi bark is known as a conacein. देखो यहाँ पे conacein. It is also known as a kurchicin. Conacein is also known as a kurchicin. ये alkaloid mainly होता है kurchi में, kurchi bark में. Okay. And again, norconicin or narconicin, valerian, valeridin, ये alkaloids होते हैं उसमें. ठीक है. Conacein, norconicin, valerian, valeramine, valeridin, ये alkaloids होते हैं. Now GPAT 2019 में कैसा क्वेश्चन था? Question was like that. GPAT 2009 में क्वेश्चन था इसके ऊपर, and the question was like 7 alpha and beta hydroxyconazine and 520 ये lupulatin 3 beta all is a active constituent of, and नीचे आपको ऑप्शन दिए थे कुर्ची बाग, देन अगेन 2-3 ऑप्शन थे और कुछ. ठीक है, तो उसका आंसर था कुर्ची बाग. तो ये कैसे, ये यहाँ पे इतना सिंपल था, वहाँ पे आपको ये नहीं देंगे कि ये कोनेसिन, कुर्चिसिन, नार्कोटिन, ये नहीं देंगे. ये दिया कंफ्यूज करने के लिए. कौन सा? 7 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सीकोनेसिन एंड 5-20-29 लुपिलेडिन 3 बीटा ऑल, ये दिया है. तो ये बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए. बट अगर किसी ने क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ लिया होगा तो उसको समझ में आता है क्या है. अभी देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ही दिया है हाइड्रोक्सीकोनेसिन. अभी कोनेसिन का किस में आता है? इट इज अल्कोलाइड प्रेजेंट इन कुर्ची बार्क. कोनेसिन कुर्ची बार्क, यहाँ पे ही आपका ऑप्शन फिनिश होगा ना. मतलब यहाँ पे ही आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो. लेकिन ये क्वेश्चन GPAT 2019 में था, आप जाके पेपर चेक कर सकते हो इसमें क्वेश्चन. Now this kurchi bark is used as an anti-protozoal. It is used in the amoebic dysentery. That's why it is an anti-dysentery. Kurchi bark is used in amoebic dysentery. So ये kurchi bark जो है फेवरेट क्वेश्चन है नाइपर के लिए. नाइपर के लिए उसमें से क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो GPAT के लिए भी आता है. इसमें 3 क्वेश्चन आता है. kurchi bark consists of which type of alkaloids? तो steroidal alkaloids. उसके बाद kurchi bark is used in amoebic dysentery, right? kurchi like chemical constituents, इसका ऊपर एक क्वेश्चन आता है. इसमें 3 क्वेश्चन आता है. Now next one, ashwagandha. Ashwagandha, as the name indicate, ashwa means what? ashwa means घोड़ा. जो घोड़े रहते हैं आपका हॉर्स, जो हॉर्सेस होते हैं आपके, इसको बोलते हैं अश्व हिंदी में. ठीक है, तो अश्वगंधा, गंधा मीन्स व्हाट? गंधा मीन्स गंधा नहीं, वो गंधा नहीं है. गंधा मीन्स क्या? स्मेल. गंध मीन्स स्मेल. गंध इज अ मराठी वर्ड, स्मेल. सो अश्वगंधा. सो these roots will smell like a horse. It will smell like a horse. क्या बोलते हैं उसको, समझ लीजिए आप, ये हॉर्स के टट्टी जैसा स्मेल करता है. जो घोड़े का टट्टी होता है उसके जैसा स्मेल करता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अश्वगंधा. ओके, सो दिस इज नोन एज विदानिया रूट, विंटर चेरी और अश्वगंधा. नाउ दिस अश्वगंधा इज वेरी इंपॉर्टेंट as far as आयुर्वेदिक मेडिसिन इज कंसर्न. तो जो भी आजकल जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, आपका वाइटलिटी बढ़ेगी, 60 की उम्र में भी जवानी जैसा जोश आपको मिलेगा. इसमें है अश्वगंधा मूलथी, इसमें अश्वगंधा मूलथी पिकोराजा, इतना ये वो है ये उतना. सो जैसा होता है वो अश्वगंधा रहता है. सो ड्राइड रूट एंड स्टीम ऑफ Vidania sominifera. Vidania sominifera family Solanaceae. This is a biological source of ashwagandha. So why? Because it is a aphrodisiac. It will increase your sexual desire. So that's why उसमें होता है. ठीक है. Cultivation collection is not important chemical constituent. So vidanin and sominiferin. Then cuscohygrine, troponin 3 alpha galoyl propane, anaferin, DL isopiletrin. These are the alkaloids. Leaves of this ashwagandha also constitute ethanolides. So vithanin is and somniferin. These are the 2 important alkaloids. Scohygrine is also important. Okay. So they are used as a
Hypotensive to decrease the blood pressure, respiratory stimulant, immunomodulator to increase the immunity. To increase the immunity, it is used immunomodulator. Aphrodisiac. Aphrodisiac means that any compound that will increase your sexual desire, that is known as aphrodisiac or sexual stimulant. So that's why अश्वगंधा आप देखो जो मार्केटिंग कैसे करते हैं, उसमें दो घोड़े दिखाएंगे, उसमें दिखाएंगे जवानी बुढ़ापे का मजा, जवानी जैसा बुढ़ापे में मजा, ठीक है. So aphrodisiac. Then cetinoids has anti-stress act. This ashwagandha has a lot of research. It is a research molecule. It has a lot of activities. It is a sex stimulant. Then it is a nervine stimulant type. Okay. It is also used in the rheumatism, gout. It is to treat the hypertension. Okay. It is a stress relieving. It also has an antibacterial activity again. Yes or yes. Then it is also an antiviral against the Ranikhet virus. So this was again once a question. Which plant has antiviral property against the Ranikhet virus? So it is the ashwagandha. So यहाँ पे याद रखो. Now next one is the Vasaka. Quinazoline alkaloid. Quinazoline alkaloids. Vasaka means it is known as the अडुलसा. मराठी में उसको अडुलसा बोलते हैं और हिंदी में आदत. Okay. So आदत थोड़ा अडुलसा मलबार नट. So मलबार नट is the synonym of Vasaka. It was asked in the question. मलबार नट. ये नहीं पूछेंगे आधा थोड़ा अडुलसा, ये क्योंकि ये सिंपल समझ में आएगा आपको, लेकिन ये नहीं आएगा. मलबार नट. मलबार नट इज a synonym of dried as well as fresh leaves of plant आधा थोड़ा वसिका family Acanthaceae. आधा थोड़ा वसिका family Acanthaceae. Then directly come to the this chemical structure. So vaccine, 6-hydroxyvaccine. These are the alkaloids present in the Vasaka. These are the quinazoline alkaloids. So out of these vaccine is a bronchodilator. That's why it is used in the treatment of asthma. It is oxidized ketone derivative of vaccine. So vaccine is a ketone derivative. Vaccine is a ketone derivative of vaccine. So it is used as the expectorant, bronchodilator, oxytocin, abortifacient. Okay. There is one molecule known as the bromohexane hydrochloride. So it is a derivative of vaccine. अभी भी आजकल जो भी कफ सिरप होते हैं उसमें है ब्रोंकोडाइलेटर ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड. So it is nothing but it is a modified form of vaccine. जो vaccine जो है वसका से ऑप्टेन किया है, इसके बाद में उसका मॉडिफाई करके ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड बनाया. तो इसीलिए तो बाबा रामदेव बोल रहा है जान दो उसमें नहीं. Next one is the pyridine alkaloid. Pyridine alkaloids, they are synthesized from nicotinic acid. Okay, they are synthesized from vitamin. For example, lobelia. Lobelia मतलब क्या, आपका जो टोबैको होता है. So it is also known as Indian tobacco और अस्थमा weed. Okay. So जिसको भी जर्दा खाने का है तो उसको मालूम होगा लोबेलिया में क्या होता है, क्या एक्शंस होते हैं. ठीक है. So it is a Indian tobacco अस्थमा weed. बाकी छोड़ दो. So it consists of lobeline. One alkaloid known as lobeline, lobeladine. Okay, so it does not consist of nicotine. It consists of alkaloid known as lobeline, and इसका breakdown होने के बाद nicotine मिलता है. So there was one scientist, Nobel Prize winner, H.O. Wieland, and his co-worker was created the structural determination of lobelia alkaloids. कि इसका स्ट्रक्चर को किसने खोज के निकाला है, ये विलैंड. H.O. Wieland, इसको नोबेल प्राइज इसके लिए नहीं लेकिन दूसरे काम के लिए. इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. ये बाकी इम्पोर्टेंट नहीं. एंड दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन. सो वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट ऑल अल्कोलॉइड्स कंटेनिंग. जितने भी अल्कोलॉइड्स कंटेनिंग ड्रग है इम्पोर्टेंट वो सब एक दो बाकी है. कोका कोला टी वो बुक में दिया है, आप पढ़ लो उसको. टी मतलब क्या, टी में टी का बायोलॉजिकल सोर्स क्या होगा. टी का सिनोनिम्स है थियासाइनेस. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम थियासाइनेसिस, लीव्स एंड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ थियासाइनेसिस फैमिली थियासी, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अल्कोलाइड्स known as a purine type of caffeine, then theobromine and theophylline. Caffeine is a theobromine, theophylline. Three types of alkaloids are there. So specific test is nothing but the Muir-Oxide test. Specific test is nothing but the Muir-Oxide test.
ये आप बाद में बुक में भी है पढ़ लेना उसका। दो या तीन प्लांट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बस, बाकी अल्कोलाइड्स का सब कुछ हो गया। नाउ इफ एनीबॉडी हैज डाउट दे कैन आस्क। समझ में आया कि इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा सब कुछ पढ़ने का नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है उतना पढ़ो, क्योंकि ये कॉग्निशन में बहुत सारा ड्रग्स है और इसका नाम आपको याद भी नहीं रहेगा जल्दी। इसको जब तक आप दिल से नहीं पढ़ते, जैसे आप बार बार उसको रिपीट नहीं करते, तब तक वो जल्दी होगा ही नहीं। एटलीस्ट आपको इतना मालूम हो गया होगा ना कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं। एक बार कान के नीचे से भी गया। समझ में आया कि आपको? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर, आज है अपना बुधवार, ठीक है। अपन फ्राइडे को भी एक लेक्चर लेंगे, तो उसमें ग्लाइकोसाइड फिनिश करेंगे, ताकि क्या है ये जल्दी अपना ये कोग्नसी का अगर एक बार हो गए ना, कोग्नसी चलते चलते हो गए, बाद में अपन फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी और सॉरी आपका फिजिकल फार्मेसी लेंगे, फिजिकल फार्मेसी फुल फ्लेज लेंगे। उसके बाद मतलब स्टडीज का आपका 2 पार्ट, बाकी जो मेन जो चीज़ है वो हो जाएगा। आपका सिर्फ इंडस्ट्रियल फार्मेसी रहेगा और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है डिस्पेंसिंग का, वो बचाएगा। ये डिस्पेंसिंग का क्या है, एक लेक्चर में हो जाएगा वो डिस्पेंसिंग का, इतना इंपॉर्टेंट होगा। और इंडस्ट्रियल फार्मेसी के लिए अपन 4-5-6 लेक्चर लेंगे और ओस्टिक्स आपका कवर हो जाएगा उसमें सब कुछ, ठीक है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है। फिजिकल फार्मेसी के लिए 5 लेक्चर या फिर मैक्सिमम 6 लेक्चर उसमें जाएंगे फिजिकल फार्मेसी में, और 7 लेक्चर उसमें आपको इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जाएंगे, ठीक है। तो वो कंप्लीट हो जाएगा, 7 लेक्चर वो, 6 लेक्चर ये फिजिकल फार्मेसी के और 1 लेक्चर डिस्पेंसिंग, तो उसमें वो लेक्चर जाएगा। मतलब 15 लेक्चर आपका सूटिक्स का बाकी है, ठीक है। आपका जो इंजीनियरिंग का पार्ट जितना होगा वो प्लस मिला के मतलब ये कितना एक 20-22 लेक्चर होता है, ठीक है। फार्माकोलॉजी और एनाटॉमी फिजियोलॉजी साथ में लेंगे अपन, और फिजिकल फार्मेसी पहले फिनिश कर देंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका चल रहा है साथ में, ठीक है। तो एक चलते चलते वो कोग्नसी एक बार लेके गए, फिनिश कर दिया ना। कोग्नसी वैसे भी उसमें कुछ अप्लाइड है नहीं, तो इसलिए कोग्नसी ले रहे हैं जल्दी। एक बार फिनिश हो गया तो बाद में आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी और फार्माकोलॉजी चालू करेंगे फुल फ्लेज। उसमें माइक्रोबायोलॉजी भी है आपका। माइक्रोबायोलॉजी में 3 लेक्चर में आपका माइक्रोबायोलॉजी फिनिश करूँगा। 3 लेक्चर में पूरा माइक्रोबायोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है जीपैट के लिए। मुझे ये तो नहीं पढ़ा है आपको, जैसे कॉलेज में लेक्चर ले रहे हैं वैसा नहीं पढ़ा। जितना माइक्रोबायोलॉजी जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी जीपैट के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा 3 लेक्चर में माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी और किसी को डाउट है तो यू कैन आस्क। है क्या किसी को डाउट? और कोग्नसी के लिए ज़्यादा कुछ पढ़ो ही मत। कोग्नसी के लिए रेफरेंस बुक में से नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, कुछ भी मत पढ़ो रेफरेंस बुक में से, डायरेक्टली जो मेरे नोट्स है, जो मेरे बुक्स है, उसके बाहर का कुछ नहीं आता। कोग्नसी में उसके बाहर कोई पूछने वाला नहीं, उतना ही पढ़ो। कोग्नसी में बहुत अच्छा दिया है उसका, और थोड़ा बहुत पार्ट बाकी है। जो फिक्स्ड ऑयल्स है उसका एक चार्ट बना के मैं आपको दे दूंगा फिक्स ऑयल का, तो दैट्स इट। इसके बाहर कोई नहीं आने वाला 10 क्वेश्चन, ठीक है। जितना भी हो आपके सिलेबस में दिया है उससे ज़्यादा ही रख लिया, ताकि कुछ भी छूटे ना। और इसमें नाइपर के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो जीपैट में कोग्नसी उतना नहीं इम्पोर्टेंट, नाइपर में है। जीपैट में बायोटेक्नोलॉजी उतना इम्पोर्टेंट नहीं, नाइपर में है। बायोकेमिस्ट्री भी नाइपर में ज़्यादा पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाइपर में ज़्यादा, क्योंकि एग्जैक्टली डबल अमाउंट है ना क्वेश्चन का। जीपैट में आपको 125 क्वेश्चन है, नाइपर में आपको 200 क्वेश्चन है, ऑब्वियसली डबल है।